Avatar Meher Baba ki jai. Dear Baba lovers and beloved Baba, it is our great privilege to get a chance to perform for Baba today. We, Sherdhonkar family, belong to Bhopal, which is a beautiful lake city in the central part of India. Today, to briefly introduce, I would like to start with elders first. I have today with me Shri Pramod Sherdhonkar, Papa, who was fortunate to get Baba's blessings in person. He has been holding Baba's daman since his childhood. Papa's mother and father were the roots of the tree who started following Baba in early 20th century. Since then, this is the fourth generation holding Baba's daman. I would also like to introduce Srimati Hema Sherdhonkar, Mummy, who is a Hindustani classical singer and a composer and a renowned Akashvani radio artist. She has been performing for various prestigious events and also been invited as a judge in several musical programs. She has launched her devotional album at Meher Baba Amar Tithi in Mehrabad, Ahmednagar. Back in 1990s, when Madhusudan ji visited Bhopal, he blessed her saying, Baba will be blessing you for all the compositions you have made and will make in future. With me, I also have the eldest son of our family. He'll be joining soon. He is gone for a school pickup, school run. And my husband, Mr. Pratik Shirdonkar, who is also a versatile singer and a performer of Indian Bollywood music. He has been running a popular YouTube channel, Frozen 5 Pratik, since last few years and performed at several events. He is also a harmonium and a guitar player. I would also like to introduce the youngest son, Mr. Prasan Shedonker, who is a multi talented singer and a tabla player. He is an excellent writer as well as he has been publishing his articles on social media, e newspaper, blogs, etc. I would like to introduce myself, Amruta, and Pranjali, who will be doing the anchoring today. Avatar Meher Last but no- Last but not the least, the youngest member of our family, Master Riyansh Kumar, who is my 5-year-old niece, will also be joining us. Music speaks what cannot be expressed, soothes the mind, give it rest, heals the heart, make it whole, flows from heaven to the soul. Without further ado, I would request Mummy to start this bhajan evening with a soothing devotional ghazal written by Homa and composed by Mummy herself. Homa, when the essence of this bhajan is, I try to find God everywhere, but wherever I seek, I find you, Meher Baba. You are the one God of all. Love God and find Him within, the only treasure worth finding. Avatar Meher Baba ki jai. Jai Baba. Jai Baba to all, everyone. Can you hear me? Yes, Mummy. Uh, I am very pleased today that I am going to present before you. I got this beautiful platform. So, as Amrita told, I am starting with my program with the Huma's Ghazal, which Baba has written by name of Huma. ढूंढता हूँ तुझको यार अब क्यों नहीं मिलता मुझे फजल करके वस्ल भी तू रहम कर रहमान तू रहमान तू ओम तू परमात्मा ओम तू परमात्मा तू गॉड तू अल्लाह ओम तू
परमात्मा तू राम तू भगवान तू गॉड तू अल्लाह मस्त ब्रह्म तू यजदान तू परमात्मा तू राम तू भगवान तू परमात्मा तू जगत करता पिता तू ही पालन हार है तू जगत करता पिता तू ही पालन हार है मालिक हर दो जहां तू एक स्थान तू परमात्मा तू राम तू भगवान तू परमात्मा तुझसे पैदा सारी हस्ती तुझसे कुदरत का निशान तुझसे पैदा सारी हस्ती तुझसे कुदरत का निशान हाजिर है हर शय में अक्सर हंस नजर पिनहान तू परमात्मा तू राम तू भगवान तू परमात्मा हुक्म तू हाकिम तू ही महकुम भी तू या खुदा हुक्म तू हाकिम तू ही महकुम भी तू या खुदा तू ही मालिक तू ही बंदा तू खता सुल्तान तू परमात्मा तू राम तू भगवान तू परमात्मा तू निराकारी है बैरन तुझसे सब रंग आशिका तू निराकारी है बैरन तुझसे सब रंग आशिका तू बशर जिंगो परी तू पूरे तू विरमान तू परमात्मा तू
मेहर करके मेहरबान का, मेहर करके मेहरबान को रब की दे पहचान तू, परमात्मा तू, राम तू, भगवान तू, गॉड तू, अल्लाह हुर्मस ब्रह्म तू, यज़दान तू, परमात्मा ओम तू, परमात्मा ओम तू, परमात्मा। अवतार मेहर बाबा की जय। What a lovely bhajan indeed. Thanks, Mummy, for this beautifully sung bhajan. As Baba rightly says, things that are real are given and received in silence. God has been everlastingly working in silence, unobserved, unheard, except by those who experience His infinite silence. The next bhajan is written by Madhusudanji and composed by Mummy's Guruji, Sri Korwarji. In this bhajan, Madhusudanji says that, O Meher Baba, what can I say about your mercy and your love? The more I do your chanting, the more happiness I find within. Please give me the blessings to not to forget you forever. Avatar Meher Baba ki jai. मैं तुरे गुण गाऊं, मैं हरि तुरे गुण गाऊं, मैं हरि तुरे गुण गाऊं, मैं हरि तुरे गुण गाऊं, गावते सुध बिसराऊं, गावते सुध बिसराऊं, मैं हरि तुरे गुण गाऊं, मैं हरि तुरे गुण गाऊं। रटते रटते तोरा नाम मेहरबान, रटते रटते तोरा नाम मेहरबान, आवते जिस निज धाम मेहरबान, आवते जिस निज धाम मेहरबान, रटते रटते तोरा नाम मेहरबान, आवते जैसे निज धाम मेहरबान, सतत सुख में रम जाऊं, सतत सुख में रम जाऊं, मैं हरि तुरे गुण गाऊं, मैं हरि तुरे गुण गाऊं, मैं हरि तुरे गुण गाऊं। सतत भव में मन मोरा मेहरबा, सतत भव में
आतत भव में मन मोरा मेहरबा, भूलत है निज रूप सुंदरवा, मधुसूदन पछताऊं मधु मधुसूदन पछताऊं, मेहर तोरे गुण गाऊं, मेहर तोरे गुण गाऊं, गावत सुध बिसराऊं, गावत सुध बिसराऊं, मेहर तोरे गुण गाऊं, मेहर तोरे गुण गाऊं, मेहर तोरे गुण गाऊं। अवतार मेहर बाबा की जय। Thank you, Mummy. That was indeed beautiful. This is a small story of a girl from Bhopal. Living in government quarters was a family where a girl was pursuing her degree in music. She used to sit in her veranda and do her studies every day. Their neighbors, the Trivedi family, were Baba lovers. Every third Wednesday, they used to have Baba bhajans in the evening. While doing her studies, she used to get mesmerized when she used to hear Madhusudan ji's bhajans, Adi Sachetan and Gate Chalo. They used to share Meher Baba books with her father, and this was the introduction of Baba to her family. This was the first time when she started following Baba unknowingly. Who knew that this was Baba's planning? One day, she was meant to sing and compose for Baba. His blessings have been with her since then. This girl was none other than Hema Shridhonkar, Mummy herself. With Baba's blessings and her dedication towards music, she has been invited in various classical musical programs across India and various programs of Meher Baba bhajans as well. Since then, she has not left Baba's daman. The next song is a ghazal written by Bahu Kalchuriji and composed by Hema Shridhonkar, Mummy herself. The zest of this ghazal is, O Meher Baba, please let the love in me for you be there forever and bless me with your love always. In this life, rest all is a mirage. It's you and your love which is immortal and infinite. Bless me with your love always. Avatar Meher Baba ki jai. Baba. This ghazal is composed in Rag Bhinnashar. I am a classical singer, that's why I have composed this. And I hope you will enjoy. अब आपको मैंने मेहर अपना बना लिया, अब आपको मैंने मेहर अपना बना लिया, पर क्या गले से आपने मुझको लगा लिया,
अब अंत में ये खाक है, बस खाक पा लिया। अब आपको मैंने महल अपना बना लिया। है हृदय के आईने में तस्वीर आपकी, है हृदय के आईने में तस्वीर आपकी। इसलिए अब देखने को गर्दन झुका लिया। अब आपको मैंने महल अपना बना लिया। पहुँचा दिया है गीत दी, पहुँचा दिया है गीत दी, बस द्वार आपके। पहुँचा दिया है गीत दी, बस द्वार आपके। अब कृपा बरसे कि मैंने अंजाम पा लिया। अब आपको मैंने महल अपना बना लिया। जला गवन निसा निसा गवन सा सा निसा धनी रम गमन मननी धनी सा। भाव जलाऊं गीत से कैसे बताऊं मैं। भाव जलाऊं गीत से कैसे बताऊं मैं। लेकिन पिया के द्वार को खाना बना लिया। अब आपको मैंने महल अपना बना लिया। पर क्या गले से आपने मुझको लगा लिया। अब आपको मैंने महल अपना बना लिया। अपना बना लिया। अपना बना लिया। अवतार मेहर बाबा की जय। Thank you, Mummy. The composition is as beautiful as the wordings and the meaning of the ghazal and the singing. The next one is one of my favorite compositions of Mummy. I would say
that this has been her signature song and one of the blessed song compositions done by her. The bhajan is written by Gulmai ji, and it says that Meher Baba is back now, to not to teach but to awaken, to start a new era with a new vision and a new message for everyone. This is the perfect inspirational bhajan for us during these uncertain times we are going through. Gulmai was not a poet. However, it was Baba's inspiration and blessings that she wrote this beautiful bhajan and presented it on his 78th birthday. Avtar Meher Baba ki jai. Jai Baba. This is very important bhajan for me. Gulmai, she was not a poet, but she has written very beautiful Baba's. So I am going to present this bhajan in Rag Malcolms. Hope you will enjoy. मन भावन अति पावन लो बाबा आए रे, मन भावन अति पावन लो बाबा आए रे, नया संदेशा युग की आशा नव जीवन लाए रे, नया संदेशा युग की आशा नव जीवन लाए रे, मन भावन अति पावन लो बाबा आए रे, मन भावन अति पावन लो बाबा आए रे। राह देखते युग थक जाता, प्रभु रूप ले तब है आता, राह देखते युग थक जाता, प्रभु रूप ले तब है आता, प्रभु अब आए, प्रभु अब आए मेहर बनकर, प्रभु अब आए मेहर बनकर, जड़ चेतन में छाए रे, छाए रे, छाए रे, नव जीवन लाए रे, मन भावन अति पावन लो बाबा आए रे, मन भावन अति पावन लो बाबा आए रे। साधु नहीं है, संत नहीं है, पीर वलियों महत नहीं है, साधु नहीं है, संत नहीं है, पीर वलियों महत नहीं है, ऊंचे से है ऊंचे बाबा, ऊंचे से है ऊंचे बाबा, प्रेम मूर्ति कहलाए रे, कहलाए रे, कहलाए रे, नव जीवन लाए रे, मन भावन अति पावन लो बाबा आए रे, मन भावन अति पावन लो बाबा आए रे। नहीं किसी से कुछ भी लेते, नहीं किसी को कुछ भी देते,
किसी से कुछ भी लेते नहीं, किसी को कुछ भी देते, किंतु जगाने युगा युगा के, किंतु जगाने युगा युगा के निद्रा से वे आए रे, आए रे, आए रे, नवजीवन लाए रे, मन भावन पावन बाबा आए रे, मन भावन पावन बाबा आए रे। जागो 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 जागो, गमधनि निसा धनि सा मधनि सा गमधनि सा गमध सा गधनि सा धनि गमध मधनि धनि सा गग सम मग धर मनि नि सा धनि गधनि सा। जागो मानव जागो जागो, जागो मानव जागो जागो, उनको अपनाओ निद्रा त्यागो, उनको अपनाओ निद्रा त्यागो, गुल बाबा को निश विंध्यावे, गुल बाबा को निश विंध्यावे, हर में वही समाए रे, समाए रे, समाए रे, नवजीवन लाए रे, मन भावन पावन बाबा आए रे, नया संदेशा युग की आशा नवजीवन लाए रे, नया संदेशा युग की आशा नवजीवन लाए रे, मन भावन पावन बाबा आए रे, बाबा आए रे, बाबा आए रे, अवतार मेहर बाबा की जय। Very nice, Mummy. It is rightly said that music is the easiest way to reach God, and you all must have felt the same. I'm sure after listening to this version, you would have definitely seconded Pranjali's thoughts. Let us continue to float in this wave of devotion. The next one is a Marathi bhajan, which has such a divine meaning. This is composed by Mummy herself. This bhajan tells us about all the worldly things people ask in God and strive to get it all their lives. This bhajan says about the illusionary world we see, and the only truth in this world is you and your love, Meher Baba. My journey will be to reach you and your feet, and that's where my peace and eternal happiness lies. Avatar Meher Baba ki jai. So this Madhusudan's bhajan I composed in Rag Bhimpalasi. देवासाठी देव कोण भजतो, देवासाठी देव कोण भजतो, देवासाठी देव कोण भजतो,
कोणी सांग पुजाऱ्यानो, देवासाठी देव कोण भजतो. देवासाठी देव कोण भजतो. देवासाठी देव कोण भजतो. कोणी मागे संपत्ती धन, कोणी संततीचे वरदान. कोणी मागे संपत्ती धन, कोणी संततीचे वरदान. कोणी कीर्ती कोणी मान, कोणी कीर्ती कोणी मान, ऐसे साधे करता. देवासाठी देव कोण भजतो. देवासाठी देव कोण भजतो. देवासाठी देव कोण भजतो. एक संपता दुसरी मागे, कधी नसते हे देते दे. एक संपता दुसरी मागे, कधी नसते हे देते दे. अनंत जन्मे अनंत इच्छा, अनंत जन्मे अनंत इच्छा, अनंत जन्मे अनंत इच्छा, तृप्त कधी नसतो. देवासाठी देव कोण भजतो. देवासाठी देव कोण भजतो. देवासाठी देव कोण भजतो. आवळा देवनी कोळा मागे, देवासाठी काही न त्यागे. आवळा देवनी कोळा मागे, देवासाठी काही न त्यागे. फेरे काढण्याच्या बेला परी, फेरे काढण्याच्या बेला परी, अंत जयाला दिसतो. देवासाठी देव कोण भजतो. देवासाठी देव कोण भजतो. देवासाठी देव कोण भजतो. हवे हवे ते कशास मगते, मिळता जे तृप्ती ना होते. हवे हवे ते कशास मगते, मिळता जे तृप्ती ना होते. सुख नाही पण दुःखच देते, सुख नाही पण दुःखच देते. इच्छे मागे पडतो. देवासाठी देव कोण भजतो. देवासाठी देव कोण भजतो. देवासाठी देव कोण भजतो. का देवाला मागत नाही, सर्व सुखे गमपनी सा pani sa ni da pa ga ma pa ga ma pa ma ga ma ni sa ni sa sa ni sa sa ni sa ni sa sa ni sa sa ni sa. का देवाला मागत नाही, सर्व सुखे निजाचे ठाई.
मधुसूदना या फिर तुनी मधुसूदना या फिर तुम्ही जो तुझला सोडवतो देवासाठी देव कोण भजतो देवासाठी देव कोण भजतो कोणी सांगा हो भक्तानो कोणी सांगा पूजाऱ्यानो कोणी सांगा हो भक्तानो कोणी सांगा पूजाऱ्यानो देवासाठी देव कोण भजतो देवासाठी देव कोण भजतो देवासाठी देव कोण भजतो अवतार मेहर बाबा की जय. What a lovely bhajan indeed. It's rightly said that the music is the easiest way to reach God, and you have proved it, Mummy, today. I pray to Baba to bless her and continue her work in music. A small boy from Bhopal did know nothing about Baba. He just followed his parents' footsteps, and humble man was born. I would like to introduce our Papa, Shri Pramod Chedhunkar. There was a very interesting experience of Pramod ji, Papa, which I would like to share. As a child, he used to visit Mehrabad with his mother and father. This is an incident straight from the horse's mouth. This is incident from 1962 when I was 11 years old. At that age, I was introduced to Meher Baba from my mother and father. We heard the news of Baba's darshan at the East-West gathering. Like every Baba lover, even my mother and father were getting ready to go to Pune. Just like other kids, I was more interested to play, and Baba's darshan wasn't something which I was interested in. However, as all of the family members were going to Pune, hence I joined them. There was a special train arranged from UP, which comes in the north of India, to Pune, which is in the southwest part of India. This train was not a passenger train. This was a goods train. However, all Baba lovers were ready to go with any mode of travel available. People had laid mats in the wagon. This wagon was used to transport cattle. People had brought Indian musical instruments like harmonium, tabla, and were singing bhajans throughout the journey. That was such a memorable journey. When we went to see Baba in Pune, there was a huge pandal where thousands of people came to see Baba. 4 people brought him on stage. I was sitting at the back, relaxed. As a kid, I hardly knew anything about Baba, and the only thought which came to my mind was, let me take a nap. Baba is never going to see me sleeping in such a huge crowd. And I slept. Suddenly, the person sitting beside me woke me up. Frightened was I. I woke up and he said, Baba is asking you, have you come here for sleeping? That day, Baba gave me the answer to all of my questions and made me speechless. He indirectly said that, son, even though you think I am not watching you, I am still watching you and will be there beside you always. This and many more to share though. I would now request Papa to sing a beautiful ghazal. This ghazal is written and composed by Kashyap ji. Avatar Meher Baba ki jai. Jai Baba. This is my favorite ghazal. Please enjoy. मैं सुबह शाम तेरे सामने आ जाता हूँ मैं सुबह शाम
तेरे सामने आ जाता हूँ, तेरे हुजूर में आकर खड़ा हो जाता हूँ, तेरे हुजूर में आकर खड़ा हो जाता हूँ मैं सुबह शाम। ये मंदिरों की घंटियां, ये अजाने ये शब्द, ये मंदिरों की घंटियां, ये अजाने ये शब्द मुझे बेचैन बना देते हैं, रह जाता हूँ, मुझे बेचैन बना देते हैं, रह जाता हूँ, तेरे हुजूर में आकर खड़ा हो जाता हूँ मैं सुबह शाम। घुमड़ घुमड़ के प्यार आता है श्रद्धा बन के, घुमड़ घुमड़ के प्यार आता है श्रद्धा बन के, तूफान आके चला जाता है, आ जाता हूँ, तूफान आके चला जाता है, आ जाता हूँ, तेरे हुजूर में आकर खड़ा हो जाता हूँ मैं सुबह शाम। मेरी मर्जी की हकीकत के भला क्या मानी, मेरी मर्जी की हकीकत के भला क्या मानी, अपनी मर्जी से न आता न चला जाता हूँ, मर्जी से न आता न चला जाता हूँ, तेरे हुजूर में आकर खड़ा हो जाता हूँ मैं सुबह शाम। अब तो ये जिद है कि दीपक से जलेगा दीपक, अब तो ये जिद है कि दीपक से जलेगा दीपक, इस जिद के निभाने के लिए आता हूँ, जिद के निभाने के लिए आता हूँ, तेरे हुजूर में आकर खड़ा हो जाता हूँ मैं सुबह शाम। मांगने वाले मांगते हैं
बहुत कुछ कैसे मांगने वाले मांगते हैं, बहुत कुछ कैसे। मैं तो प्यासा हूँ तेरे प्यार का, आ जाता हूँ। मैं तो प्यासा हूँ तेरे प्यार का, आ जाता हूँ। मैं सुबह शाम तेरे सामने आ जाता हूँ। तेरे हुजूर में आकर खड़ा हो जाता हूँ। मैं सुबह शाम। अवतार मेहर बाबा की जय। Thank you, Papa. That was an enthralling performance, straight from heart to heart. I would like to now request Pratik Shetonkar to sing another lovely bhajan composed by Hema Shetonkar. The wordings of this song say, chant the word Meher and purify your soul. Happiness lies in chanting your name. That's the way I would like to show my love and respect for you, my Lord. When the mind soars in pursuit of things conceived in space, it pursues emptiness. But when a man dives deep within himself, he experiences the fullness of existence. Rightly said by Meher Baba. So is the power of chanting. Chanting of your name, beloved Meher Baba, will make me release the true me in me. I would also like to mention that Pratik was fortunate to create a devotional album for Meher Baba, which was released in the year 2010 at Mehrabad. So he has been successfully singing and composing Baba bhajans as well. Without further ado, I will like to request Pratik to sing a beautiful bhajan for us. Avtar Meher Baba ki jai. अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर कहो मन, मेहर कहो मन, मेहर कहो मन, मेहर कहो। निर्मल पावन नाम मेहर का, मेहर ही आठों याम कहो। मेहर कहो मन, मेहर कहो मन, मेहर कहो मन, मेहर कहो। निर्मल पावन नाम मेहर का, मेहर ही आठों याम कहो। मेहर कहो मन, मेहर कहो मन, मेहर कहो मन, मेहर कहो। जल में थल में अनिल अगन में, नील गगन में मेहर है। सचराचर जग के कण कण में, जड़ चेतन में मेहर है। जल में थल में अनिल अगन में, नील गगन में मेहर है। सचराचर जग के कण कण में, जड़ चेतन में मेहर है। मेहर नाम की पतित पावनी, मेहर नाम की पतित पावनी, सरिता में अभिराम कहो। निर्मल पावन नाम मेहर का, मेहर ही आठों याम कहो। मेहर कहो मन, मेहर कहो मन, मेहर कहो मन, मेहर कहो। निर्मल पावन नाम मेहर का, मेहर ही आठों याम कहो। मेहर कहो मन, मेहर कहो मन, मेहर कहो मन, मेहर कहो।
मेहर अनादि अनंत अगोचर, अविकारी अविकार है। सकल सृष्टि के संचालन का मेहर स्वयं आधार है। मेहर अनादि अनंत अगोचर, अविकारी अविकार है। सकल सृष्टि के संचालन का मेहर स्वयं आधार है। भव बंधन से मुक्ति मिलेगी, भव बंधन से मुक्ति मिलेगी। मेहर कहो निस्तार कहो, निर्मल पावन नाम मेहर का। मेहर ही आठों याम कहो, मेहर कहो मन मेहर कहो मन, मेहर कहो मन मेहर कहो। निर्मल पावन नाम मेहर का, मेहर ही आठों याम कहो, मेहर कहो मन मेहर कहो मन, मेहर कहो मन मेहर कहो। अवतार मेहर बाबा की जय। What a lovely bhajan to tell us that chanting the Lord's name cleanses our selfish ego and allows true light of love within our soul to shine towards God and all living beings. That was beautiful, Pratik Bhaiya. Thanks for the mesmerizing singing. I can say that Baba has blessed you with a lovely voice. I would now request Prasan Shidhonkar to sing a soulful ghazal, which is written by Bashir Badr and composed by Osman Mir. This ghazal says, O Lord, keep me humble and down to earth. Even though you help me to reach the highest of the high, I would still like to bow down and respect the good in all. Keep me grounded and humble always. Be humble and never think that you are better than anyone else. For dust you are, and onto dust you shall return. Avtar Meher Baba ki. अवतार मेहर बाबा की जय। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे। खतावार समझेगी दुनिया तुझे, खतावार समझेगी दुनिया तुझे। तू इतनी ज्यादा सफाई न दे, तू इतनी ज्यादा सफाई न दे। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे। हंसो आज इतना कि इस शोर में, हंसो आज इतना कि इस शोर में सदा सिसकियों की सुनाई न दे, सदा सिसकियों की सुनाई न दे। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे। गुलामी को बरकत समझने लगे, गुलामी को बरकत समझने लगे। असीरों को ऐसी
रिहाई न दे, असीरों को ऐसी रिहाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे। खुदा ऐसे एहसास का नाम है, खुदा ऐसे एहसास का नाम है, खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे, रहे सामने और दिखाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे, खुदाई न दे, खुदाई न दे, खुदाई न दे, खुदाई न दे। अवतार मेहर बाबा की जय। Very nice, Prasan. Thank you for a lovely treat of a soulful ghazal. Live simply, behave humbly, give generously, pray faithfully, act kindly, smile honestly, speak truthfully, and love sincerely. Avtar Meher Baba ki jai. Indeed, Pranjali, so very correctly said. That was mesmerizing indeed. Thank you, Prasin. Those are the apt words and the composition. Could I now request Mummy to sing another beautiful composition of Madhusudanji? This bhajan says, there is no religion to God. Some call it Ram, some call him Rahim, some call him Jesus, and some call him Vaheguru. In the end, all are one. You are the one. You have shown us one path to follow, and that is the path of love and helping others. Avtar Meher Baba ki jai. How many times left there? Ask. Ask. How many times? Yeah, we have. Huh? Okay, Baba. We still have time. Yeah, please go ahead. Yeah. How much time? How much time Um, is there? Like you still have like more like how much you can sing. Yeah, we are enjoying. Very good. Thank you, Jai Okay, Baba. I am taking Madhusudan's original composition of Madhusudan. I got opportunity to sing with him this song. That's Wow. why I have taken. Thank you so much. Jai Baba. Jai Baba. श्वास श्वास पे नाम ले, फूल था श्वास मत खोल, ना जाने इस श्वास का पावन हो या न हो, अति सीधो टेढ़ो बहुरे जीवन का व्यवहार, समझो तो सुख पाओगे वरना दुख पार। तो भज कोई भी नाम रे, तो भज कोई भी नाम रे, सबका एक ही धाम रे, सबका एक ही धाम रे, तो
भज कोई भी नाम रे तो भज कोई भी नाम रे सबका एक ही धाम रे सबका एक ही धाम रे राम कहो या रहीम कहो 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 रे कहने में क्या जो विकार है कहने में क्या जो विकार जपना केवल काम रे सबका एक ही धाम रे सबका एक ही धाम रे तो भज कोई भी नाम रे तो भज कोई भी नाम रे सबका एक ही धाम रे सबका एक ही धाम रे मुफ्त लड़ाई में क्या रखा है क्या रखा है सांच की खोज हमें करना है मुफ्त लड़ाई में क्या रखा है क्या रखा है सांच की खोज हमें करना है तेरा मेरा सब तजना है तेरा मेरा सब तजना छोटी सब धूमधाम रे धाम रे सबका एक ही धाम रे सबका एक ही धाम रे तो भज कोई भी नाम रे तो भज कोई भी नाम रे सबका एक ही धाम रे सबका एक ही धाम रे सबको है अधिकार यहाँ पर हाँ यहाँ पर हाँ यहाँ पर सबको है अधिकार यहाँ पर हाँ यहाँ पर हाँ यहाँ पर सत्य दर्शन का काम निरंतर काम निरंतर काम धीमे धीमे हम मंजिल
प्रेम के जो जगा कर बार बार धरती पर आकर, धरती पर आकर छिप गए प्रेम की जो जगा कर, पीछे लगाए उनके ऊपर, पीछे लगाए उनके ऊपर, हमने धर्म के काम रे, काम रे, सबका एक ही राम रे, सबका एक ही राम रे, तो भज कोई भी नाम रे, तो भज कोई भी नाम रे, सबका एक ही राम रे, सबका एक ही राम रे। यही कहने में है अवतार में है, अवतार में है, अवतारा मौनमयी संदेश के द्वारा, संदेश के द्वारा, संदेश के द्वारा, मधुसूदन चाहे उजियारा, मधुसूदन चाहे उजियारा, दामन उनका थाम रे, थाम रे, सबका एक ही राम रे, सबका एक ही राम रे, तू भज कोई भी नाम रे, तू भज कोई भी नाम रे, सबका एक ही राम रे, सबका एक ही राम रे, सबका एक ही राम रे। अवतार मेहर बाबा की जय। Beautiful, mummy. What a lovely composition and beautifully sung. We will have one more bhajan and after that Babadhun. As it is rightly said, God is all full. He is self contained. He is eternal satisfaction. The next ghazal is written by famous Sufi poet Seemab. Baba, after listening to this ghazal, liberated Seemab from this world. The Sufi sees a reflection of God in every human. The poet Sufi says that he found the concept of God to be beyond the capability of his assessment. When he bypassed the conventional destination or rational understanding and went past it, then he found the way to God. Avatar Meher Baba ki Jai. This ghazal is very important. Baba liberated Seemab. After hearing his ghazal, this ghazal, I composed this in Ra Kalavati. This is a beautiful wordings in this ghazal. अब क्या बताऊं मैं तेरी मिलने से क्या मिला,
इरफान गम हुआ मुझे दिल का पता मेरा अब क्या बताऊं मैं तेरे दिल में से क्या मिला इरफान गम हुआ मुझे दिल का पता मेरा अब क्या बताऊं मैं मंजिल मिली मुराद मिली मुद मिला मंजिल मिली मुराद मिली मुद मिला सब कुछ मुझे मिला जो तेरा छिपा मिला सब कुछ मुझे मिला जो तेरा छिपा मिला अब क्या बताऊं मैं खुद भी न खुद शनास मिला खुद नुमा मिला खुद भी न खुद शनास मिला खुद नुमा मिला इंसान के भेस में मुझे अक्सर खुदा मिला इंसान के भेस में मुझे अक्सर खुदा मिला अब क्या बताऊं मैं या ज़ख्म दिल को चीर कर सीने से फेंक दे या ज़ख्म दिल को चीर कर सीने से फेंक दे या एक तरफ करके निशाने वफा मिला या एक तरफ करके निशाने वफा मिला अब क्या बताऊं मैं क्यों ये खुदा के ढूंढने वाले हैं नामराद क्यों ये खुदा के ढूंढने वाले हैं नामराद गुजरा जो मैं खुदी खुदी से खुदा मिला
अब क्या बताऊं मैं सीमा 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 को शगुफ्तना देखा तमाम मेरे सीमा को शगुफ्तना देखा तमाम मेरे कम वक्त जब मिला हमें गम आशना मिला कम वक्त जब मिला हमें गम आशना मिला अब क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्या मिला इरफान गम हुआ मुझे दिल का पता मिला अब क्या बताऊं अवतार मेर बाबा की Wow, that was simply amazing. What a beautiful composition, and how divine are the wordings of this ghazal. Thank you, Mummy. I would like to move on to Baba Dhun after this. But before that, I would like to thank you all to give us the opportunity to join us for Baba's Bhajan. Let our love for Baba keep on growing until we become one to Lord. Avtar Meher Baba ki jai. On behalf of the Shedhonkar family, we wish you a healthy life with Baba's love as your guiding light for you and your generations to come. Let's pray to have love for all living beings, and thus your teaching in our daily lives lead us to eternal happiness. Avatar Meher Baba ki jai. I would also like to thank Mummy Uma Shedhonkar, Papa Pramod Shedhonkar, Pratik Shedhonkar, Prasin, and Pranjali to make this evening memorable and bless us with their divine singing. Last but not least, we would like to thank our accompaniments on tabla, Surendra Wankhede and harmonium, Jitendra Sharma for their contribution. To conclude this musical evening, I would like to request Mummy and Papa to sing Meher Dhun, Avtar Meher Baba Ki Jai. last Jai Baba to all Baba lovers. I would personally like to thank all who have provided this platform and come here to listen to Baba's bhajan. Baba has given me opportunity to sing at many auspicious events, and one of those is today. I am very thankful to all of you, and Prashant, you also. Let Baba's love bless each one of us always. Jai Baba. At last, I am going to present a Meher Dhun, which is written by Madhusudan, but this is I composed in Bhairavi, Rag Bhairavi last. This is ending part. And in our Bhopal center, we used to sing this in last item, 100th birthday of Baba. That was very important for me, this dhun. Jai Baba to all Baba lovers. In Sanskrit, there is a saying Vasudhaiva Kutumbakam, which means that this whole world is my family. As Baba has taught us in his preachings as well. Let us follow his path and forget all the differences, for all of us from inside are one and belong to one. The mighty Lord, Meher Baba, Avatar Meher Baba ki Jai.
जय जय मेहर, जय जय मेहर, जय जय मेहर, जय जय मेहर, मेहर मेहर जय प्रभु, मेहर मेहर जय प्रभु, मेहर मेहर जय प्रभु, मेहर मेहर जय प्रभु, जय जय मेहर, जय जय मेहर, जय जय मेहर, जय जय मेहर, मेहर मेहर जय प्रभु, मेहर मेहर जय प्रभु, मेहर मेहर जय प्रभु, मेहर मेहर जय प्रभु। अलख निरंजन भव भय भंजन, मुनि मनरंजन जय प्रभु, अलख निरंजन भव भय भंजन, मुनि मनरंजन जय प्रभु, 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 जय जय मेहर, जय जय मेहर, जय जय मेहर, जय जय मेहर, मेहर मेहर जय प्रभु, मेहर मेहर जय प्रभु, मेहर मेहर जय प्रभु, मेहर मेहर जय प्रभु। जय जगजीवन, जय संजीवन, जय करुणाधर जय प्रभु, जय जगजीवन, जय संजीवन, जय करुणाधर जय प्रभु, 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 जय जय मेहर, जय जय मेहर, जय जय मेहर, जय जय मेहर, मेहर मेहर जय
अवतार मेहर बाबा की जय। Is my cry? Baba ki Jai. Yay! Oh, this is fourth generation. Baba ki Jai. Baba ki Jai. Wow. So beautiful, wonderful, divine singing. Emma ji, Pramod ji, Pratik, Prasan, Randali, Amrita, everyone. Oh my God, we really enjoyed it. So beautiful concert. Thank you all so much. Jai Mer Baba. Thank you very much. Jai Baba. Jai Baba. Now I will ask everyone. I will ask everyone to unmute themselves and say thanks to the, yeah. That was beautiful, very, very beautiful and wonderful harmonium, wonderful tabla, wonderful translations, and such beautiful people. Wow, you filled our hearts with love and beauty. Thank you in Baba's love. Thank you very much, Jai Baba. Thanks a lot. We really enjoyed your singing and seeing your faces, you know, and how beautifully the ladies are dressed. You gentlemen, we would like to see you in your finery too, by the way, you know. So next concert. Will do. Okay. Bye for now, Baba. Jai Baba. Jai Baba. Lovely to see 3 generations of Baba lovers, one and another one and another one, and all over the place. Absolutely. Thank you, Shailaja, again for arranging, and Prashant as well. Thank you for arranging this. And yeah, I think Angela has left for work, but thanks for her too for giving us a platform. And we feel so happy singing Baba bhajans. It's just making our whole worries stay away from us and enjoy this evening. Jai Meher Baba, Pramod ji and Emma ji and Shirotkar family. It's Meher Chandnori from Hyderabad. Jai Meher Baba. Jai Baba. Mummy, Papa, you can unmute. जय बाबा अनम्यूट है ना अब नहीं आएगी आवाज अनम्यूट करो मम्मी आ रही है आवाज आ रही ओके जय बाबा टू एवरीवन वो अच्छा किया बेटा बहुत अच्छा रहा सभी का अच्छा रहा बाबा की कृपा है इट्स ऑल बाबा's blessings to everyone yes he makes it happen Emma हाँ Jai Baba जय बाबा listen you Jai सुना Baba अच्छा लगा मजा आया कि नहीं बाय सबको कैसा लगा हाँ बहुत मजा है तभी तो बैठी हूँ तब से सबको सुना मैंने प्रसन्न को प्रतीक को रौनकर साहब को तुम्हें सबको सुना अच्छा लगा बहुत दिनों बाद सबको देखा भी और सुना भी जय बाबा अच्छा बाय बाय एवरीवन जय बाबा Yeah, we'll say 3 Avatar Meher Baba ki jai. जय बाबा Yeah. Avatar Meher Baba Baba ki jai. jai. Avatar Meher Baba ki jai. Baba ki jai. Avatar Meher Baba Avatar ki Meher jai. Baba ki jai. Avtar Meher Baba ki jai. Jai. Thank you all. Jai Baba. जय बाबा Jai Baba. Thank you. Jai Baba.